Hello everyone, class 11, subject accountancy. Okay, so welcome on Andy Ganga platform. Myself, Jitendra Gupta. I teach you accountancy and business study. Okay guys, so listen carefully. So देखिए again in a subject accountancy textbook for class 11, double entry, bookkeeping एंड अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड दिस बुक ऑथर इज अ T.S. Grewal। ऑथर इज T.S. Grewal। ओके एवरीवन, एंड पब्लिशर इज अ सुल्तान चंद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। Publisher is a Sultan Chand and Sons Private Limited, and buy book at online web portal www.sultanchand.com. Okay, yeah, with the help of Amazon, yeah, Flipkart. Okay everyone, so in our subject content is our first topic in accountancy. Point number first, accounting comma bookkeeping. So accounting is included in a subject accountancy. Okay, right? In a second topic, basic accounting term. What do you mean by basic accounting term? Okay, so sales, purchases, purchase return, sales return. Okay, so all these technical terms are known as basic accounting term. Okay, so what is account? So account is a record of particular person या group of person. Again, account word is represent a basic accounting term. That means chapter number 2. Okay, next, classification of accounting. So in a classification of accounting, dear students, in a classifies in two following manner. First is personal account, second is real account. Okay, first is personal account, second is real account. It is a part of classification of accounts. Personal account include again three sub category: natural personal account, artificial personal account, representative personal account. For example, any organization means Andy Ganga schools, any companies, any banks, XYZ Limited, all these are included in a artificial personal account. Ram, Mohan, Sita, Geeta, Babita, all accounts are considered in a natural personal account. Clear? Second aspect is real account. Real account classified in two sub following manner. First is real account is classified following two manner: real account and a nominal account. Okay, so इसी series again journal. After 3 points, point number 4, journal entry. When in a business we sell goods to a Ram. Okay, आप किसी भी persons को goods sell कर रहे हैं, so we will passing the entry in a journal book, right? After the journal book रिकॉर्डिंग या पासिंग द लेजर अकाउंट. जैसे ही आपने जर्नल एंट्री को कंप्लीट किया, राइट, उस पर्सन का आपने क्या किया, लेजर में अकाउंट ऑपरेट किया. जिस भी पर्सन को सपोज कीजिए गुड्स सोल्ड टू राम. ओके, सो वी विल पास द एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, सो एंट्री पास की इन अ जर्नल बुक एंड अकाउंट ऑपरेट इन अ लेजर बुक. Ledger means खाता बही. Okay, so Ram's account and sales account operate in a ledger book. Clear everyone?
Yes or no? Okay. Next, subsidiary books. What is subsidiary books? For examples, purchase return books, sales return books, sales books, purchase books. Okay. If any customer purchase a goods in a credit basis, for example, Ram account debit to sales account, so this transaction is recorded in a sales subsidiary books, right? Okay. Second, cash book. Cash book is only recorded in a cash transaction. For example, cash sales to Mohan, right? So we will entry pass cash account debit to sales account, not affect the Mohan account because entry perform in a cash manner. Okay everyone. ट्रायल बैलेंस इसी सीरीज में एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. समटाइम्स वी विल ओमिशन द एंट्री. मीन्स आप कभी कभी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं किसी रीजन से या जनरल पर्पज से. सो उस केसेस में हम क्या करते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री. नेक्स्ट BRS, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अगर आप अकाउंट होल्डर हैं तो आपके पास बेटा पासबुक होगी बैंक अकाउंट की. ओके. बैंक अकाउंट पासबुक प्लस बैंक के जो है आपका खाता ऑपरेट है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को मैच करने के लिए हम BRS प्रिपेयर करते हैं. प्रिपेयर अ BRS या रिकंसाइल अ BRS, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ओके. नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट in your subject, double entry bookkeeping या final accounting. Again, final accounting classify in 3 main approaches. First is trading account, means general trading purpose के transactions are recorded in a trading account. Next, profit and loss account. This account consider a daily routine expenses like office expenses, rent expenses, electricity expenses. Okay. Next, balance sheet. Balance sheet prepare at the end of financial year. A question is raised, what do you mean by financial year? What do you mean by financial year? So financial year start 1st April to 31st March. For example, 1st April 2020 to 31st March 2021. That is called a financial year. Okay. So final account without adjustment. Final account without adjustment. Right everyone? So इसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट. ओके. सपोज दैट आप किसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं. सो इन दैट केस transaction records with adjustment in a final account. Clear? So ये हमने कुछ कंटेंट डिस्कस किए हैं. आपके सब्जेक्ट डबल एंट्री बुककीपिंग ऑब्लिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11. ओके. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टॉप कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th कॉमर्स. सो गाइज प्लीज फोकस ऑन स्क्रीन. टॉप कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th commerce. So first course is CA Foundation. Everyone is known about what is CA. Is CA course conducted by ICAI, Institute of Chartered Accountant of India. Okay, this institute conduct a CA Foundation exam and IPCC exam and a final exam. Okay. Next, CS Foundation. This exam conducted by ICSI, Institute of Company Secretary of India. Institute of Company Secretary of India. Okay. Next, आप जनरल BCom BSc या BA ना करके BMS Bachelor of Management Studies in a Hotel Management,
right? In a hospitality management, again CMA, cost and management accounting, expert in accounts and costing. BBA, जनरल बीकॉम ना करके बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट एवरीवन? ए इंटीग्रेटेड कोर्स 5 ईयर BBA प्लस MBA, BBA प्लस MBA में क्या होता है आपका 1 ईयर सेविंग है. सो टॉप कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th कॉमर्स इन अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, BMS, CMA, BBA and integrated course BBA plus MBA. Okay everyone, so focus on the screen बेटा. ये आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है टुडे. ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम ऑन ND Ganga प्लेटफॉर्म. ओके.